So let's look at what our error function or cost function looks like. Basically what we are interested in is the difference between the predicted value and the actual value. ट्रेन डाटा में ये एक्चुअल वैल्यू रियल रिजल्ट्स हैं, जो अगर आपके रियल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं ये उन्हीं के रिजल्ट्स हैं, ठीक है. और प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है? दिस इज समथिंग दैट आवर एल्गोरिथम टर्न्स आउट और द एल्गोरिथम प्रोड्यूसेस. This comes from the choice of hypothesis. So a good hypothesis would result in lesser difference between the two, and a bad hypothesis would result in a greater difference. और इसी difference को minimize करना, that would be minimizing our overall error and going towards a solution that is as closely approximated to the real world as is possible. ठीक है? So the thing is, once we have the cost function, the next step or important thing to us is finding the derivative of this cost function. Why do we need this derivative or partial derivative? We require this in order for the gradient descent to work. Okay? So why do we have a partial derivative? The reason for partial derivative is among all of the elements of this equation, we see that some of these are constants such as y, and even in the hx we've got only one variable, that is the w, where the x is treated as a constant. ठीक है, दोबारा बता देती हूँ हम पार्शियल डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितने वेरिएबल्स यहाँ पे मेरे पास इस इक्वेशन में आए हुए हैं, इसमें से जो हमने चेंज या एडजस्ट करना है वो सिर्फ w की वैल्यू है. तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि इस सारी इक्वेशन में से अपने काम की w की वैल्यू तक पहुँचने के लिए पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं. इसकी complete derivation is something we had done previously as well. I need you to refer to that. This is the final equation that we come up with. I am not explaining it again because I have explained it in quite some detail in the previous lecture, so go through those as well. And this is the final equation that we come up with. This is good for all those parts where I've got only one layer and I have a clear difference between the actual and the predicted one. Question is, what happens when we have many hidden layers? Right? So let's look at a working example. So before we move on to the detailed example of backpropagation, let's start off with checking what the derivative of sigmoid is. But I'll explain in a little while why we need the derivative of sigmoid. The equation of sigmoid is 1 by 1 plus e raised to the power minus x. Sigmoid is a squashing function that takes continuous input and produces output in the range of 0 and 1. So you give it any number and it would produce another number in the range between 0 to 1. So based on the detailed derivative, we find the derivative based on x. d by dx of 1 by 1 plus e power minus x. So according to the rules of derivation, what we do is we take the power and increase it by a number, decrease it by a number, and then multiply it with the variable part of the equation. Okay? So we had minus 1, power uski minus 2 ho gayi, and we multiply it with the variable part. इसमें since we are differentiating on based on x, तो यहाँ पे this 1 would be a constant and e power minus x would be treated as a variable. Next up, this is what we end up with, e power minus x over 1 plus 1 by ex whole square. Now we can split this equation into two parts. अगर आप इसी 2 पावर को ओपन कर लेते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाती है 1 by 1 plus ex और ex over this. If you look closely, this part corresponds to the original equation. ठीक है, तो ये जितना हिस्सा हमारे पास आ गया है ये ओरिजिनल इक्वेशन का है. तो इसी का अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 by 1 plus ex 1 minus this whole equation. So this is actually equals to sigmoid of x into 1 minus sigmoid of x, क्योंकि ये वाला part भी sigmoid of x है and this is again sigmoid of x. So based on this we say that sigmoid of x is equals to sigmoid of x into 1 minus sigmoid of x.
You can do this derivation by hand yourselves as well, a couple of times for you to memorize it really good. Now let's take a simple backpropagation example. We've got one neuron. It has two inputs and both of these inputs are being multiplied by some weights. This weighted average is weighted summation is equals to z, and this z is put through some function, sigmoid in this case, in order to get the activation, and then based on this activation we do get the output, or output as positive or output as negative. So the error over here is difference between the actual output and the actual target, the output that we did produce and the target that we were hoping for, or the target that is given in the real world. So what we'll do is we'll take a partial derivative of this error based on W. W is the only variable वो है that we can control. इस सारे सिनेरियो में W है जो हम एडजस्ट करके एक डिफरेंट वैल्यू ले सकते हैं. X की वैल्यू हमें रियल वर्ल्ड से आ रही है, वो फिक्स्ड है, और बाकी की सारी कॉम्प्यूटेशंस इन्हीं की समेशन पर हो रही है. So what you, the only thing that you can change or you can tune or modify is the W values. So we take a partial derivative based on W. So expanding this equation, ये इसके ऊपर हम लगाते हैं chain rule. Expanding this equation, we've got a partial derivative of E with respect to W, and this derivative of E is put on the equation of the output or the sigmoid, and this sigmoid equation is split again based on Z, and this Z is then again फाउंड डेरिवेटिव ऑफ वन बेस्ड ऑन W. ठीक है, चेन रूल लगाया हमने कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर. हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E निकाला बेस्ड ऑन जो आउटपुट वैल्यू थी. आउटपुट वैल्यू में हमारे पास वेरिएबल क्या है, Z, और Z के अंदर हमारे पास क्या है, W. तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ E निकालना है W के रेस्पेक्ट से, तो वी विल हैव टू कंप्यूट ऑल दीज पार्ट्स इन द मीनवाइल. बेस्ड ऑन आउट, या हमारी जो फाइनल आउटपुट आती है उसके हिसाब से हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाफ टारगेट माइनस आउटपुट वैल्यू होल स्क्वायर, एंड दिस इज कैलकुलेटेड एज, मतलब अब 2 आपका कैंसिल हो जाएगा इस हाफ के साथ. दिस इज कैलकुलेटेड एज माइनस टारगेट माइनस आउट वैल्यू. सिमिलरली जो आपकी आउटपुट वैल्यू है that is derived, और उसके डेरिवेटिव हम निकाला बेस्ड ऑन Z वैल्यूज. अब ये जो Z है, दिस इज इस Z के ऊपर हमने लगाया है सिग्मोइड वैल्यू. सो हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ आउट जो निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन Z, दिस मीन्स कि हमने सिग्मोइड ऑफ Z को डिराइव किया है, हमने सिग्मोइड ऑफ Z के ऊपर अपना डेरिवेटिव निकाला. इस वजह से हम वी वर टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ सिग्मोइड इन द फर्स्ट स्टेप, because we need that derivative as substitution over here. So what I did was I substituted the derivative of sigmoid over here, और वो वैल्यू निकल आती है sigmoid of z 1 minus sigmoid of z. और we've just figured out कि ये sigmoid of z वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास किधर से आ रही है, इधर आउटपुट से. So I can say कि this is equals to output value 1 minus output value. लास्ट फेज में हमने क्या किया कि ये जो सिग्मोइड ऑफ Z की वैल्यू है, सॉरी ये पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ Z निकाला बेस्ड ऑन W. अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि दिस इज डन फॉर ईच इंडिविजुअल वेट. W के साथ अब हमारे पास सब्सक्रिप्ट आ गया दैट वुड स्पेसिफाई कि हम अपने ढेर सारे वेट मैट्रिसेस में से कौन से वेट मैट्रिक्स के कौन से वेट की बात कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में मैंने क्योंकि एक ही परसेप्ट्रॉन से शुरू किया है, सो वी डू नॉट हैव अ सुपरस्क्रिप्ट, वी ओनली हैव अ सबस्क्रिप्ट, एंड दिस सबस्क्रिप्ट स्पेसिफाइज विच वेट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो डब्ल्यू आई की वैल्यू अगर मैं 1 कर देती हूँ तो फिर वी बी कंप्यूटिंग दिस बेस्ड ऑन W1, और अगर आई की वैल्यू 2 कर देती हूँ तो देन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी W2. सो व्हाट वी एंड अप विद दिस, इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालें तो what you end up with is the value for x of I. ठीक है,
अब ये भी this is again something we have gone into detail of. This equation should be familiar to you by now. This is something we computed previously, so do look at those notes as well. Combining all of these, जो हमारे पास final equation बनती है, error with respect to W is equals to minus output, 1 minus output and target minus output. Target is the real world value and output is the calculated value. ये हमने अपने sigmoid का derivative निकाला, ये हमने ये इस part 1 का derivative निकाला और ये हमारे पास इस z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w निकला. ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी फाइनली गेट एज द फाइनल इक्वेशन. तो अगर फॉर इफ आई एम कंप्यूटिंग द एरर फॉर अ सिंगल न्यूरॉन neuron in a neural network, let me say that again. So if I am computing error for a single perceptron neural network, this is the equation I'll end. तो हमारी वेट अपडेशन स्टेटमेंट क्या बनती है? दिस इज अगेन सिमिलर टू व्हाट वी डिड प्रीवियसली. हम वो अपने जे थीटा की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं. न्यू वेट इज इक्वल्स टू द ओल्ड वेट, सो डब्ल्यू आई इज इक्वल्स टू प्रीवियस डब्ल्यू आई. जो भी पहले उसकी वैल्यू थी उसके अंदर हमने कोई चेंज लेकर आया एंड दिस चेंज इज इक्वल्स टू ईटा. दिस ईटा इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज. ठीक है, ये याद रखिएगा, अल्फा या ईटा से हम इसको डिनोट करते हैं और ये रेट ऑफ चेंज है. ये बताता है कि हमारे ग्रेडियंट डिसेंट में हाउ लार्ज और स्मॉल द जंप वुड बी, सो इट सिग्निफाइज हाउ ग्रेजुअल द चेंज वुड बी. एंड देन द डेरिवेटिव ऑफ एरर विद रिस्पेक्ट टू वेट्स. सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, फाइनल इक्वेशन हमारे पास वेट अपडेशन की क्या बन जाती है? डब्ल्यू आई इक्वल्स टू डब्ल्यू आई प्लस ईटा इंटू out 1 minus out the sigmoid values, target minus out the final output values and xi.